भाइयों, आप देख रहे हैं भारत की भाषा विद संदीप भटनागर। और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने एक इंटरव्यू दिया है एनडीटीवी में, जो वर्ल्ड फोरम का उनका एक एंक्लेव चल रहा था उसके अंदर। और इतनी शालीनता से और एक लिमिट के अंदर रहते हुए उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज को बता दिया कि आज इंडिया क्या है और आपको क्या करना चाहिए। उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि देखिए, एक आदमी होता है और उसकी पावर्स जब कम होने लगती हैं तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और यही हालत आज वेस्टर्न कंट्रीज की है कि आज उनकी बात बहुत लोग सुन नहीं रहे हैं, तो उनको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। जैसा कि पहले होता था, जो अमेरिका ने बोल दिया वो फाइनल है। वर्ल्ड की कोई भी कंट्री उसको निगेट नहीं करती थी और उनको क्वेश्चन नहीं करती थी। और यही आदत उन्होंने बोला कि कनाडा की हो गई है। कनाडा के बारे में उन्होंने बोला कि उनके जो एम्बेसीज हैं इंडिया में, वो एक तरीके की जासूसी करते थे और वो उसको सपोर्ट करते थे क्योंकि वो वेस्टर्न कंट्रीज है। और अगर इंडिया का एक डिप्लोमेट वहां पे कनाडा में ये देख रहा है कि भाई इंडिया के बारे में कनाडा में क्या चल रहा है, अगर इंडिया के अगेंस्ट में कोई आतंकवादी एक्टिविटीज प्लान की जा रही हैं तो क्या की जा रही हैं, अगर उसके बारे में कोई इंडिया का डिप्लोमेट सोचता है या उसकी आप लेता है तो ये गलत है। इसका मतलब ये हुआ तेरा कुत्ता कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी। तो एक बहुत ही बढ़िया एक क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं डॉक्टर जयशंकर की, जो 5 मिनट की क्लिप है, जिसमें कि वो बहुत ही पोलाइटली जवाब दे रहे हैं कनाडा की गवर्नमेंट को और वेस्टर्न की गवर्नमेंट को, स्पेशली अमेरिका की गवर्नमेंट को। तो सुनिए दोस्तों आगे की। Look, to some extent, I think there is a general Western issue, and to some extent, a very specific Canada issue. I think the Western issue has been, after all, let's be frank, the world order after 1945 was heavily Western. I mean, it was before 45 also in an imperial colonial sense. And after 1990s, it was again very, very Western. So what has happened, you can say, in the last 20, 25 years is that there is what you can call a rebalancing, a multipolarity. Many non-Western countries have a bigger share, a bigger contribution, a bigger role, if you would, and a bigger influence which will naturally come. So the equations, in a way, between the West and the non-West, I think is changing. And it's not easy to adjust to that. You know, if you've been dominant and you are less dominant, you know, if there was a time when, you know, in the conversation you were looking up and I was looking down, and now the conversation is no longer like that. It takes a little bit of getting used to. So I would say, in a broad way, on multiple subjects, today when the natural diversity of the world has started to express itself, when many more countries, and particularly many more large countries like India or China, have points of view and positions to take, there will be contestations, there will be frictions, there will be arguments. So it won't be so smooth. You know, that's a larger picture. Where Canada is concerned, I think there are some very specific issues. I think a lot of people know that. You know, you are right. If you look at the people to people, if you look at the business relationship, it's very, very strong. You know, for a lot of people, it is
very difficult to imagine that we could reach the state of relations that we have today. So why has this happened? I would say definitely there is some history, you know. I mean, for the non-Indians in the room, I should remind you that in the 1980s, Indian Air India plane was blown up flying out of Canada, and in many ways that's a kind of a overhang, because it wasn't just an incident; it was a reflection of something which was going on there. But at a time when many people felt that, look, that's all behind us, I think developments in the politics went in a different direction, and we are seeing to some degree the consequences of that. So again, I give you the first observation that, you know, the broad attitude versus the specific, and I'll give you 2-3 examples of it. You know, Canada has just they asked us to subject our High Commissioner to a police inquiry, you can say, and we chose to withdraw the High Commissioner and diplomats. Now, look at it. They seem to have a problem if Indian diplomats are even trying to make efforts to find out what is happening in Canada on matters which directly pertain to their welfare and security. But look what happens in India. Canadian diplomats have no problem going around collecting information on our military, on our police, profiling people, targeting people to be stopped in Canada. So apparently the license that they give themselves is totally different from the kind of restrictions that they impose on diplomats in Canada. Or even take the press. I'm at a press event. Now, you know, when we tell them, saying, look, you have people openly threatening leaders of India, diplomats of India. You know, sometimes the threat is not just verbal, it's physical. So their answer is freedom of speech. Okay? Now, when Indian journalists make social media comments, I mean, if you threaten the Indian High Commissioner, he is supposed to accept it as freedom of speech. But if an Indian journalist says the Canadian High Commissioner walked out of South Block looking very grumpy, it is apparently foreign interference. Now, how, you know, look at the, I mean, this is not even, double standards is a very mild word for it. So, look, there is this thing that we will do it differently at home, we will do it differently abroad, we will do it our way, but that doesn't apply to you. So I think these are the larger, I would say, adjustments which have to happen in this changing world. तो सुना दोस्तों आपने, बहुत माइल्ड वर्ड्स में डॉक्टर जयशंकर ने रिप्लाई कर दिया कैनेडियन एजेंसीज को कि अब वो जमाना चला गया है कि आप जो भी करें वो जायज है और हम जो भी करें वो नाजायज है। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कनाडा के केस पे। अभी मैं इसके बारे में भी एक वीडियो और बनाऊंगा। उन्होंने बहुत कुछ बोला है इस एनडीटीवी के फोरम पे, और उन्होंने अपना दिल निकाल के रख दिया है, और जो उनके मन में गुस्सा है कनाडा के लिए और वेस्ट के लिए, वो बड़े माइल्ड वे में उन्होंने बाहर निकाल के रखा है दोस्तों। तो मुझे तो ये क्लिप बहुत ही अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये क्लिप शेयर करूं। और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई हो और जो मेरी स्पीच है उसमें अगर आपको पसंद आई हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।